Hi. Yesterday, over the weekend, the result of Indigo or InterGlobe Aviation came. Weekend में Indigo की result आई थी and I created analysis and I did an analysis of the result as well as we did an analysis of the chart and we positioned ourselves ki what would be the case scenario and what could have happened. So in Gist, you can have a look into the video. The video should be available in the top right hand corner. So वो first part of the video है और वहाँ पे मैंने बोला था कि I will do a follow up video after today's trade and this is the video after that which is going to study what happened. So कल हम लोग जैसे देखे थे जैसा मैं बोला था कि इंडिको सिंस नवंबर ऑफ लास्ट ईयर नवंबर के महीने से इंडिको इस पर्टिकुलर रेंज में स्टक है कि ऊपर में वो जाके 1700-1800 लेवल्स पहुंचती है. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ मोर ऑफ अ रेंज बाउंड सिंस अ लॉन्ग टाइम. सो you know, this is the first which happened retest and this is the second time, this is the third, fourth, दो बार ये टच किया and this is the fifth रिजल्ट के पहले किया और आज रिजल्ट के बाद एग्जैक्टली वो सिक्स्थ टाइम ये टेस्ट किया. सिमिलरली हम लोग को दिख रहा है कि ये 1500 लेवल्स में इसको ऑल्सो मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट मिल रही है. सो एज ऑफ टुडे इंडिगो इज़ रेंज बाउंड और इसी रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट कर रही है. वी ऑल्सो डिड एन एनालिसिस कि अगर हम इसके बीच वाले पोर्शन का एनालिसिस करते हैं सो हम देखें कि वो फर्स्ट वीडियो में विच इज़ इन द टॉप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉर्नर उस वीडियो में आपको और भी एनालिसिस मिल जाएंगी कि मैं बोल रहा था कल कि दिस इज़ अ वेरी गुड एंड मैच्योर मूव. So Indigo has posted some losses and as a result of which we have a huge upper we have a candle and in the morning in the first 30 minutes Indigo 1750 levels से shoot up करके 1840 levels पहुंच गई and then there was selling which came and as a result of which it closed around about 1750 levels. So we are going to look into a 5-minute chart and this is exactly what happened कि आज सुबह उस वीडियो में मैं बोला था कि किस लेवल्स पे ओपन होना इंडिगो के लिए सबसे बेस्ट है and that's exactly what happened and triggered this particular move. So 1754 में ये ओपन हुई थी और within 10 minutes ये जाके 1842 लेवल्स को टेस्ट की which is an all time high for Indigo, for InterGlobe Aviation. और मुझे यही लगता है कि मे बी दिस इज समथिंग विच वॉज a short covering sort of a thing. There were a lot of shorts which were carried but eventually यहाँ पे जो interesting move आती है वो है ये वाली move. सो थ्रू आउट द सेशन वो एक बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेट करती रही थ्रू आउट द सेशन. सो यू कैन सी फ्रॉम 10:15 इन द मॉर्निंग और टिल द एंड ऑफ द सेशन इट वाज मूविंग बिटवीन 1755 लेवल्स एंड 1770 लेवल्स. अगर हम इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं 15 लेवल चार्ट पे और अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि वाई इज़ दिस सच अ इम्पॉर्टेंट वाई इज़ दिस गोइंग टू बी सच एन इम्पॉर्टेंट लेवल. सो लेट्स हैव अ लुक. सो ये हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप एक 15 मिनट चार्ट में देखो सो इट वाज ऑलरेडी कंसोलिडेटिंग बिटवीन द 1770 एंड 1750 रीजन और अभी बहुत ये सब 15 मिनट्स चार्ट में है. So as a result of which you can see over here that there is absolutely nothing happening between these region. लेकिन it's also true that it's not going below 1740 region. And I think the move which we saw today, this one is something which we should forget. In the sense कि before and after results some of the moves they happen because of positions and people try to close the position. So maybe it was something related to short covering. So there were some shorts which were created and since Indigo didn't gap down or didn't go below
even though it posted some huge losses for this quarter. So I think one of the things which happened is बहुत सारे लोग ने अपना short cover किया, and as a result of which we see this upper wick. But no matter what, this is we can see from a daily chart one of the very important there are two important things which we have to remember is ये region जब भी touch किया है, right, in the previous first instance, then it corrected. In the second instance, it corrected immediately. In the third instance, it corrected immediately. In the fourth instance, this is the second time वो इसी region को touch कर रही है, but it's not correcting. And this actually says a lot, and it's consolidating in a very tight range. And I think this is something I'm going to remove all these drawings for now, and let's have a clean chart. So you can see in this particular zone it tested, and then it consolidated between this particular zone 1780-90 between 1730, और फिर आज जाके रेस्ट की और फिर ये कैंडल बनी है. So I think maybe this gives a very wrong impression, because जो भी मार्केट में नए आए हैं मे बी वो लोगों को लग रहा है कि ये गिरेगी, लेकिन from what I can say and from what I think, this is not such a this is not, I hope this is not going to be the case. And eventually what we can see is, if we draw a line, let me draw some lines for further analysis. You can see this particular zone is right now a very interesting zone, and this is what I would say is a zone of resistance. So जब भी इसी range में जा रही है, there's always a selling coming in. And if you look for a 5-minute chart, this zone corresponds between 1800 levels. We can say it's something, we can have it something over here. So 1795 levels, 1790 levels, and 1820 levels or 1810 levels, we can say. This is a very important zone, because ये zone में जब भी enter हो रही है, so if you look for a daily chart, so you can see whenever this is entering this zone, it's actually correcting. But maybe in the very near future, if the sentiments are right, this zone will eventually get taken off. So as a trader, I think what can happen next is it will again go and try to retest 7090 level tomorrow, and the only thing which is important is it has to make sure that it's able to at least hold this particular zone of 1730 1740. इस zone को अगर वो hold कर पाती है in a very near short term, I think Indigo is one of the stocks which is going to break this level soon. And if this level gets broken, so as you can see ये level, ये जो consolidation phase, as we have also discussed in the earlier video, this started in the month of November, and we are in the June, so already 6 months have passed. और यहाँ पे अभी ये जो move आई है, this is a very good move, and the movement of the stock which happened over here is something which had something to do with short covering after the results, and after the results the positions getting closed, but I think it actually did good that it tested this exact level, and then it retraced. Now what's important is whether it's able to hold this 1730 levels. I would be monitoring this level. If this level gets broken, then I am pretty sure that 1680 levels is definitely in the cards. But I think looking at this prospect of the sector and the market sentiment, maybe that won't be the case. And I think going forward in the today is 7th of June after market, so I think on 8th 9th of June maybe this 7090 level will again get tested, and we have to see if there are new positions and if there are new longs which get created अगर ऐसी situation आई. So I would be not surprised if a breakout of this finally happens, and then we should be expecting a very good move towards 1900 levels. So this is all from, at least if 1820 is broken, I think 1950 or 2000 should be in the cards. As a result of which, let's see. This is a follow-up video. In the first video, which you will find, I have already did this analysis, and I told you that
even though the results were not good, but it seems like the company is poised for a new highs in the near future. It's just about whether this breakout will happen in the month of June or July. It's only a matter of time. The good thing is with corona second wave getting under control and with the restrictions getting removed, so maybe this is not something which so corona की सेकेंड वेव की जो दिक्कतें आई थी वो ऐसे जैसे जा रही हैं. और हम लोग का उस पूरा जो वीडियो की बात कर रहा हूँ जो मैं पहले बनाया था उसमें हम देखें हैं कि कंपनी ने एक साल में अपनी क्या स्ट्रैटेजी बनाई है. सो अगर वो कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट अच्छे से कर सकती है, सो ऑब्वियसली इंटरग्लोब एविएशन और इंडिगो इज़ वन ऑफ द कंपनीज जो शायद एक बहुत अच्छी बुल रन दे यहाँ से. सो मे बी अभी हम लोग बहुत ही छोटी सोच रहे हैं कि शायद कि हम लोग शायद 1900 या 2000 की बात कर रहे हैं, लेकिन इफ़ थिंग्स गो राइट यू नेवर नो, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट इवन 2200 levels easily reach हो सकती है. But it all depends on how the future prospects of corona are, because ये सेक्टर ये ऑलरेडी उससे जूझ रही है. लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट कि जिस तरह से मैनेजमेंट ने अपने आप को पोजीशन कर रही है, जिस तरह से अपनी फ्लीट बढ़ा रही है, सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ इंटरग्लोब एविएशन इज एबल टू टच 2200 within the end of this year, provided the कोरोना challenges they don't often keep coming. अगर कोरोना फिर से ना आए, अगर फिर ऐसी दिक्कतें ना आई, और अगर यहाँ से अगर हम लोग स्मूथ सेल करके हम लोग अगर चलें, so company like Indigo is poised as per technical analysis to go for very good highs, and I think this is something जो which can be a good wealth generator for the coming 21, 22, 23 इन सालों में. And this is just this is just a speculation, this is just the way I am looking into it. Please consult your financial advisor before you make any investment or you take any trade. आप अपने financial advisor से पूछ के ही trade करें, और don't take anyone's work. So basically what I'm trying to say is मैं इस कंपनी को डेफिनेटली फॉलो करूँगा, क्योंकि ये कंपनी एक बहुत अच्छी सर्विस देती है हमारी इंडियन मार्केट को, और इसकी service as and when this will get as and when okay, one of the things is many a times people always talk about IRCTC. maybe IRCTC में trade करता हूँ, invest करता हूँ. आज IRCTC made all time high, and I am very much optimistic about the future of IRCTC, right? As an Indian, we should be proud of our Indian railways. But one of the things you have to understand going forward, the future is in the airline industry, and for a market like India जहाँ पे हमारी इतने सारे नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, ऐसे छोटी छोटी सिटीज़ में भी एयरपोर्ट्स आ रही हैं. सो जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ हाउ द बिजनेस मॉडल विल चेंज. जब हम बचपन में थे तो हम लोग बहुत ही रेयरली फ्लाइट में ट्रैवल करते थे. अब फ्लाइट में ट्रैवल करना इज़ नथिंग बिग, इट्स जस्ट लाइक यू आर ट्रैवलिंग इन अ बसेस. So going forward, definitely airline industry in India is a huge advantage, and this is exactly what has also happened in other countries just like China. So China may be airline industries की huge boom आई. So we are in an advantageous position कि हम अभी भी market capture जो हुई है उसमें बहुत scope है, and maybe players like InterGlobe Aviation, if it doesn't go bankrupt, because airline industry is one of the most riskiest industries, or it's a very fund intensive industry, but I think Indigo की management are smart enough to consider all of this, and especially इस कोरोना टाइम में जिस तरह से इंडिगो अपनी फ्यूल एफिशिएंट फ्लीट बढ़ा रही है, अपने जो पुरानी एयरक्राफ्ट्स हैं जो उतनी फ्यूल एफिशिएंट है नहीं, उसको जिस तरह से रिटायर करवा रही है. सो द कंपनी इज़ थिंकिंग फॉर लॉन्गर टर्म. कंपनी बहुत दूर की सोच रही है. सो होपफुली उसका एडवांटेज हम जैसे इन्वेस्टर्स को भी
मिलती रहेंगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिगो. ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स ये तो आती रहेंगी. आप मार्केट ऊपर नीचे होती ही रहेंगी. सो दैट्स एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम. अगर ब्रेकआउट आई 1900 लेवल से तो हम तो उसको ट्रेड करके लेके जाएंगे 2200 लेवल्स तक. दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज दिस इज अ गुड, दिस कंपनी हैज़ रियली इम्प्रेस्ड मी इन द सेंस कि वो अपनी एक लॉन्ग टर्म सोच दे रही है और दिखा रही है. एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच विल बेनिफिट इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी. ऑफ कोर्स ये कोई इंडिगो की कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं, सो डोंट थिंक दे आर पेइंग फॉर माई फ्लाइट टिकट्स. ये जस्ट एक मैं अपनी जस्ट मुझे क्या लगती है और कि जिस तरह से कंपनी पॉइस कर रही है, और एक कंपनी जिसमें मैं अभी मेरी पोजीशन है और जिसमें मैं आई एम ट्राइंग टू प्ले ब्रेकआउट. सो राइट नाउ इज ट्रेडिंग अबाउट 80-81. जो मैंने वो बोला था, आज ट्वीट भी किया था कि मैं इसमें पोजीशन बना रहा हूँ. सो स्पाइस जेट भी एक अच्छी कंपनी है. सो मे बी यू कैन ऑल्सो डू एन एनालिसिस ऑफ योर्स एंड सी एंड अंडरस्टैंड दैट वाई इंडिगो इज़ द नंबर 1 ब्रांड एंड यहाँ से वो किस तरह से आगे जा सकती है. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग. हैव अ नाइस डे. और do let me know if this analysis which I did on Indigo was helpful to you. Bye bye.